तो सबसे पहले ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद सभी को जो लोग इस वक़्त इस शो को देख रहे हैं। कौस्तभ भी एक स्पेशल रंग में दिखाई दे रहे हैं आज ईद के इस उपलक्ष्य में और मुकाबला भी लखनऊ में है और डेफ़िनेटली जिस तरीके से हमें पता है जहाँ पर लखनऊ का स्टेडियम है, उसी के पास में एक बहुत ही बड़ा मॉल है जहाँ पर ईद की बहुत बड़ी पार्टी है। तो ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक इश्यूज़ हो गए बट स्टिल पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज़ इट्स डेफ़िनेटली एलएसजी वर्सेस जीटी एंड ईद टुगेदर। वी ऑल नो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ लाइक cricket matches on such special occasions. चिरायो, we have seen like इसके पहले भी हमने देखा है दिवाली के दिन मैचेस का होना, शिवरात्रि के दिन मैचेस का होना, होली में मैचेस का होना, ईद के साथ उनका मैचेस का होना. It is really special for the fans even क्योंकि आप इस तरीके से भी अपना फेस्टिवल मना सकते हैं to really go and enjoy the match on your favorite festival as well, चिरायो. यस जब जब भी इनफैक्ट अगर किसी दिन अच्छा मैच होता है तो वो खुद ही एक फैंस के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है. वी हैव ऑलरेडी सीन इट कि लास्ट इंडिया पाकिस्तान गेम जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, दैट हैपेंड अ डे बिफोर दिवाली, सो पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली इवन बिफोर इट एक्चुअली वाज. तो जब जब भी फेस्टिवल्स के दिन एक त्यौहार होता है तो सभी त्यौहार के दिन अपने घर पर बैठे होते हैं, परिवार के साथ में मना रहे होते हैं त्यौहार को, और फिर सभी एक साथ बैठ के मैच का भी लुत्फ उठा सकते हैं अपने ही परिवार के साथ. तो देखने में मजा भी आता है और अगर रोमांचक मुकाबला होता है तो उन्हें बस ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारी ईद जो थी वो सक्सेसफुल हो गई, हमने एक अच्छा मुकाबला देख लिया. तो त्योहार के साथ में मैचेस का रहना सच में मतलब एक मनोरंजन की ही बात होती है और इस वक्त व्यूज भी काफी अच्छा आता है. सो यस, मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन जिस दिन ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल था 2011, उस दिन हमारे यहाँ कुछ था. आई डोंट रिमेम्बर, देयर इज समथिंग इन माय फैमिली हैपनिंग. सो हमारे यहाँ ना एक वो जो पार्टी पूरा सेलिब्रेशन था उसके साथ एक प्रोजेक्टर सेट किया गया था बिकॉज सबने मना कर दिया था कि हम लोग नहीं आ पाएंगे. इट्स 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मैच, हम लोग नहीं आ पाएंगे. तो हम लोगों को सबने डांटा था कि नहीं जाना है, वो इम्पोर्टेंट है, हम लोग प्रोजेक्टर लगवा रहे हैं, सब लोग मैच वहीं देखेंगे. तो दैट वाज द वन मोमेंट जहां पर मेरी पूरी फैमिली, पूरे खानदान ने साथ में बैठ करके दैट टू ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल देखा था, जो हम पूरे इंडियंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग है. कौसब, डू यू रिमेंबर एनी सच इंसिडेंट जहां पर आपने अपनी फैमिली के साथ मैच एंजॉय किया हो, कोई सेलिब्रेशन या कोई फेस्टिवल, एनीथिंग हैपेंड? जी देखिए, as far as I can remember, I think 2011 World Cup again comes to my mind. It was a huge day for us. I was very young. I don't remember much of it, but I remember that we had good food on that day, and after the match, India won. After the match, we saw so many firecrackers and all that. I was really excited. I've never seen something quite like that happen. Of course, I wasn't born in 1983, and 2003 World Cup final we qualified. I know there's an immense amount of craze among Indian fans. In 2003, I remember people were like worshiping, like they are fasting because of Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly, for people like that. In 2011, we saw something similar for Sachin Tendulkar, for MS Dhoni. So the craze in India is, of course, there. The festival adds something else to it. I think 2011 World Cup final was itself is a celebration for us. Tomorrow it's Sachin Tendulkar's birthday. It's another celebration for all Indian cricket lovers. So yeah, a lot of celebration and a lot of cricket. Good day for Indian cricket fans. Right, and even today we have this double header, LSG versus GT and Mumbai versus Punjab in the evening. And these two matches on this occasion of Eid, definitely fans would be very excited because उनको Eid celebration करने के साथ साथ मैच भी अगर देखने को मिलेगा, that to stadium में जाकर के, उनसे ज़्यादा खुश अभी और कोई नहीं हो सकता. But let's take a look at the head to head because ये जो मुकाबला है लखनऊ और गुजरात का, ये अपने आप में काफी एक्साइटिंग है. पिछले सीजन इन दोनों ही टीम्स ने अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी तक इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं, जिन दोनों को गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किया है. एलएसजी अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है गुजरात के आगे. तो इसका मतलब ये है कि आज का मुकाबले का रिजल्ट या तो अगेन गुजरात का डोमिनेशन लखनऊ पर प्रूव करेगा या फिर लखनऊ एक कमबैक कर सकती है इन फ्रंट ऑफ गुजरात और उनसे एक मुकाबला स्नैच करके अपनी किटी में ऐड कर सकती है. बट चिराई, आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन, सिंस एलएसजी और जीटी का जो हेड टू हेड है वो कंप्लीटली गुजरात डोमिनेट कर रहा है. सो व्हाट आर द चांसेस इन टुडेज मैच, हु इज गोना टेक दिस वन match ahead of each other? Like, is it going to be Gujarat again winning it, or LSG maybe marking one match against Gujarat in their kitty? Since you are talking about head-to-head, it is from the previous season 2022, and Lucknow has been doing really well in this season particularly. They are placed second on the points table, whereas Gujarat Titans are fourth on the points table. So this clearly shows that right now Lucknow looks like a better side. They have lost lesser games, and उसके अलावा गुजरात की जहाँ तक बात करें, गुजरात भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है. although they have lost on a couple of occasions. उसके अलावा अगर बात करें कि लखनऊ में कंसर्निंग चीज़ क्या है
क्या आज क्विंटन डिकॉक खेलेंगे उसके बारे में भी बात करना होगा। नहीं खेल रहा अगर है, क्विंटन, नहीं खेल रहे, काइल मैच खेल रहे। ओके, सो कंफर्म हो गया। सो अगर क्विंटन डिकॉक नहीं है तो उसके उसके बाद में लखनऊ का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी वीक होता है। वी हैव सीन दैट लखनऊ, केएल राहुल इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फ्लो। उनके बल्ले से रन्स बिल्कुल आ रहे हैं बट द स्ट्राइक रेट इज नॉट अप टू द मार्क। दीपक हुडा हैज बीन फेलिंग कंसिस्टेंटली। और बाकी तो फिर कृणाल पांड्या वगैरह इनसे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये बड़े स्कोर्स बनाए। ओनली निकोलस पूरन एंड स्टोइनिस आर एडिंग रन्स एट द एंड, बट they can't, you can't expect them to fire every day. So Hmm. given that Gujarat's bowling lineup is very strong, they have Rashid, they have Mohammad Shami, who is the swing Sultan swing जिन्हें आजकल कहा जा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में जोस बटलर का उन्होंने विकेट लिया इतने बढ़िया तरीके से, अच्छी अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में, जहाँ गुजरात के सभी बॉलर्स पिटे थे, अकेले मोहम्मद शमी ऐसे थे जो उनके लिए पॉजिटिव बनकर निकले थे। तो ये जो एक मुकाबला है ये काफी एकदम कांटे का मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास में बॉलिंग और बैटिंग काफी अच्छी है, दोनों के पास में ऑलराउंडर्स काफी अच्छे हैं। तो बिल्कुल यही यही देखने वाली बात होगी कि आज गुजरात कितना कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है लखनऊ के अपने फोर्ट्रेस में। डेफिनेटली गुजरात के लिए भी एक बड़ा दिन होगा और लखनऊ के लिए भी बड़ा दिन होगा। फिलहाल टॉस अपडेट अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता दूं, गुजरात टाइटंस ऑफ टू बैट इस मुकाबले में। वहीं अगर एक बार पिच रिपोर्ट की तरफ देखें तो लखनऊ की पिच वी ऑल नो किस तरीके से बिहेव करती आ रही है, बट स्टिल द पिच इन इकाना स्टेडियम असिस्ट पेसर्स बेटर देन स्पिनर्स। द पेसर्स हैव bowled at a better average and healthy strike rate than spinners. The average first inning score in the stadium is 157.7. So लखनऊ की ये जो पिच है एक हेल्दी कॉम्पिटेटिव मुकाबले के लिए कंप्लीटली रेडी है, और वही जो दोनों की 11 है वो भी अपनी तरफ एक इशारा कर रही है। बट कौस्तव, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, people are calling this particular match as the best chasing side versus the best defending side. So do you really feel that in IPL they are the best sides to chase and to defend? There is no other team who stands by their way, or maybe they really own this name? So I'm assuming you're saying Gujarat Titans are the best chasing side, right? Yes. Yeah. Right. So I think, yeah, Hardik Pandya in the toss, during the toss rather, but he said ki we are batting first just because we want to put pressure on our batters so that they are able to prove themselves. So they are not chasing anymore, and neither Lucknow is defending. Or what? Am I missing something? No, it is so. So Gujarat is batting, so I don't think so. They are not chasing this time, and Lucknow is not defending this time. So the what to say? The complication is different this time. So we will expect a good match, of course. But since neither of the team is defending, or like Gujarat is known for chasing it down, so Gujarat is batting first, so they'll have different kind of pressure into this match. Shubman Gill will have to take way more responsibility. So we'll have to take. Hardik Pandya, whoever is coming, they'll need to prove themselves with the bat today. Since they're batting first, they'll not have a particular target to chase. So they'll initially at least will try to post around 180 runs. And batting first, it's never easy. We know that. And same with Lucknow, they have quality spinners in the ranks. They'll try to like put defend. They are not defending, they're like they'll try to restrict rather Gujarat in a very low total so that they can chase it down easily, but it is not easy to chase in Ikana Stadium, to be very honest with you. We have seen that is why Lucknow prefers to bowl first, bat first rather. Right, right. And if we go by the changes in Lucknow as well, Yudhvir Singh Charak misses out in place. Amit Mishra comes in. Chirayu Amit Mishra, the 40-year-old guy, we all know the kind of bowler he is. He's known for taking wickets and the kind of like who can really turn the table when it comes to the responsibility he usually takes. I'm really excited to see him today, but having this age, having this kind of fitness, how do you see Amit Mishra in LSG in today's match? What are their Look, responsibilities? we have all grown up watching Mishra ji like bowl in the IPL. I've always Praise. been a big fan of Amit Mishra, and now with that bad look, like he's looking like a monster at the crease. And he has also been taking wickets. It's not just that he is getting games; he's picking important wickets for the team. In the last game, in their game against RCB, he picked the wicket of Virat Kohli. So that shows that he's in great form. In fact, all the spinners who are kind of very old to this league, who have been playing this league from the very beginning, like Piyush Chawla is doing really well. Amit Mishra is now doing really well. So I'm really excited to see how these old guys can provide their best to the team and contribute in the
contribute to let their team win. But Hmm. अमित मिश्रा जहाँ तक बात करते हैं तो he is one of the leading wicket takers in the league. He has 3 hat-tricks in the league, which is not easy for any bowler. It's a great record to have, and yes, of course, Gujarat batters will have to face Mishra like very carefully. एंड उनके चार ओवर आप ठीक से खेल लीजिए, जहाँ जहाँ मौका मिलता है रन मार लीजिए, और उसके अलावा आप एक बड़ा टोटल सामने लाइए, बिकॉज लखनऊ इज अ स्लो विकेट, इट इज नॉट easy to score runs. The ball won't come into the bat nicely. So that's why Gujarat will have to, be really careful, not just against Amit Mishra, but the entire bowling unit of Lucknow. So yes. Definitely. With that, let's take a look at the player to watch out of Gujarat and Lucknow Super Giants, because these two teams have a lot of players who have got a great skill, and we have from LSG. It is the captain KL Rahul. He has played 115 matches. He has scored 4,083 runs. He has 132 as his highest, and he has scored 32 50s and 400s. So we all know the numbers he has already got in his kitty, but definitely he needs to fire some runs today. That's what we expect from the player like KL Rahul. And if we go about Gujarat Titans player to watch out, that is Rashid Khan. He has played 97 matches, and for sure he has a lot of reasons to be the player to watch out. We know he know how to take wickets, how to give economical overs, and he has done this in the past. Though in the last match, like thoda sa RR ke against thoda sa idhar udhar ho gaya tha, but still Rashid Khan is player to watch out for Gujarat Titans. Let's take a look at the playing 11 of Gujarat and Lucknow as well, because they have already announced their 11 with one change in Lucknow. It's KL Rahul and Kyle Mayers. Afterwards, Deepak Hooda, Marcus Stoinis, Krunal Pandya, Nicholas Puran, Ayush Badoni, Naveen ul Haq, Amit Mishra, Avesh Khan, and Ravi Bishnoi. Now, if we talk about Gujarat Titans playing 11, so they have got, let's see what players they have got for them. It's Ridwan Saha with Shubman Gill, then Hardik Pandya, Vijay Shankar, Abhinav Manohar, David Miller, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohammad Shami, Noor Ahmed, and Mohit Sharma. Kaustav, these two playing 11s we have already got, but we were already discussing about LSG's like LSG team's fielding performances so far, because they have taken most catches in IPL 2023, and they are the like favorite team when it comes to the fielding department as well. And to win a trophy, it is very important to click all three segments of the game, like fielding, batting, bowling. LSG is good at bowling, their batting is good, they have got a lot of options, and then they're doing good in fielding as well. So how big of a team they are today in IPL, and basically which team needs to see to LSG and learn accordingly? See, of course, they are a very strong team, and fielding is, of course, a very important part of the game, and that is one of the reasons why they are second on the IPL points table. When it comes, if you look at LSG's team, KL Rahul is a gun fielder, Deepak Hooda is a gun fielder, Marcus Stoinis is a gun fielder, Krunal Pandya is good, Nicholas Puran is doing good behind the stumps. So they have quality fielding in it, and I think Gautam Gambhir, who's their mentor, who's uh, gave a lot of focus on the fielding department as well. We have seen when he was playing for KKR, he used to give a lot of effort, like to make a good team who fields well as well. And same we can see in the Lucknow Super Giants camp as well. So they have quality batters, they have quality bowlers, and I really hope the way they are playing, I really hope they qualify for the playoffs, because last year they missed the trophy by some margin. They qualified for the playoffs, if I'm not very wrong. They lost in the eliminator probably. This year, I think they should challenge for the title. Especially, see, KL Rahul has a lot of pressure on his back. He's not being able to play the way he wants to play, or he's known for. So KL Rahul will have the pressure to deliver. And if he manages to lift the title this year, I think his name will be cemented in the Indian team for the upcoming ODI World Cup. It's still there. Probably he will play as a wicketkeeper batter in number 5, but still there are question marks on him. I think if he manages to win the IPL trophy, all the speculations will end. And yeah, I hope LSG does well this season. Definitely, LSG has all the reasons to do well in this season, because they have already tick marked all three aspects of the game. Chirayu, I would like to ask you this question: like as we were discussing about LSG's fielding performance in this tournament, which team do you think should look to LSG and do accordingly, because their fielding department is really bad when it comes to the performance in cricket match? I think Kolkata's fielders lost 3 or 4 catches in the previous game. So yeah, Kolkata's fielding has not been up to the mark. But it's just a day. Sometimes the catches are difficult. Sometimes it just happens. So
It is not that they don't have good fielders. In fact, they are some of the best fielders in the world. But yes, fielding is a very important aspect of the game, because we have always known that the catches win matches. And if you can save runs in the field, if you can make some brilliant efforts to save runs for your team, you never know when those 1 or 2 runs or 4 or 5 runs, make it a really big difference. बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन दैट पिछले कुछ मैचेस हमेशा आखिरी ओवर तक ही जा रहा है, आखिरी ओवर में चार पांच रन चाहिए होता है। अगर फील्डिंग के वजह से ये 4-5 रन का जो डिफरेंस है वो अगर 10 या 12 रन का हो जाता है, सो इट कैन बी रियली डिफिकल्ट फॉर टीम्स टू मैनेज इन द लास्ट ओवर। और ये हमेशा से ही हम देखते हैं कि जब जब फील्डिंग खराब हुई है, टीम को हमेशा उसका जुर्माना चुकाना पड़ा है। तो yes, the fielding department of Lucknow currently is really good. Gujarat is also doing really well in terms of fielding, but ये तो हमने देखा ही है कि मतलब आईपीएल में वी हैव ऑलवेज सीन some of the best fielders keeping their efforts in the field, and we have always seen that fielders have been really impressive जब से वो कार्बन कमाल कैच होता था, एंड वी आल्सो नाउ हैव एक्टिव कैच ऑफ द मैच। तो दिस इज फॉर एनकरेजिंग फील्डर्स टू डू वेल इन द फील्ड, जिसकी वजह से काफी एक इसको एक वो नहीं माना जाता है, एस्पेक्ट नहीं माना जाता है किसी एक खिलाड़ी का। बट जितना अच्छा एक फील्डर होता है, जैसे कि हमने मोहम्मद कैफ के मतलब जो खुद एक कितने महान फील्डर रहे, उन्होंने भी हमेशा कहा है कि अगर मैं लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं 20 या 30 रन ही बना पाऊंगा, पर अगर मैं अपने टीम के लिए 20 रन और बचा पाऊँ तो इट इज एज गुड एज स्कोरिंग 50। सो यही उनका भी बोलना था, और यही मैं मतलब मेरा भी यही कहना है कि जितना एक फील्डर अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है रन बचाने में, वो तो ये एक काफी अच्छा है। अगर वो बैट से भी परफॉर्म नहीं करते, सो इज परफॉर्मिंग इन सम वे। सो यस, फील्डिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर। राइट, फीलिंग इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक कमेंट आया है कौस्तव, आई थिंक यू वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस, सिंस केएल राहुल की परफॉर्मेंस पर हम लोग बात कर रहे थे, बट कहा जा रहा है, प्रतीक पूछ रहे हैं कि इफ वी कीप असाइड केएल राहुल्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, देन हाउ डू यू सी हिम एज द कैप्टन इन दिस कॉम्पिटिशन सो फार? देखिए, लास्ट मैच में जब लखनऊ ने डिफेंड कर दिया था वो टोटल, तो उसके बाद से हम केएल राहुल के कैप्टनसी के बारे में बहुत चर्चा हुआ है कि वो बहुत अच्छा कैप्टनसी कर रहे हैं। To an extent, I'm not convinced totally, because I'm not a big fan of KL Rahul's captaincy whenever he did for be it for Punjab, be it for Lucknow, or be it in the Indian colours. I have not been a big fan of KL Rahul's captaincy, but of course, if he's getting the job done, then credit goes to him. That is the most important thing to help your team win, be it via batting, via captaincy, however you can help. So he has done the job in the last match, but I think there's a lot to go. There's a lot left he needs to achieve. So in the remaining games, again, I'm not a big fan of KL Rahul's captaincy, but then again, you expect KL Rahul to do well, because they're like the Indian team, be it in the Indian team or in the Indian Premier League. I have seen legends of the game defend KL Rahul's captaincy a lot. I don't understand much of the reason behind it, but then again, maybe they have seen something, some good quality in KL Rahul. That is the reason he always gets backing. But I would love to be surprised and would love to see him do well as a captain as well. डेफिनेटली इफ यू डू वेल, सो हम सभी को के लिए काफी सरप्राइजिंग होगा और काफी अच्छी बात होगी। एक बार हम आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के सबस की भी अपडेट दे देते हैं जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है। इट्स जयदेव उनादकर, कृष्णप्पा गौतम एंड डैनियल सैम्स और पारेख मनकड़ और कर्ण शर्मा। तो एक तो यहाँ पे एक कर्ण शर्मा का नाम सुनकर के मेरे को याद है कि आप लोग इस बात को लेकर अवेयर है कि कर्ण शर्मा इज नोन टू बी दैट प्लेयर जो जिस टीम में होते हैं वो टीम ट्रॉफी जीती है उस साल। This लाइक is a ही different Karan Sharma. That अच्छा, Karan ये Sharma. डिफरेंट It is a वो similar name, but yeah, अच्छा, आई थॉट ही इज द वन हु इज इन द टीम, बट राइट नाउ इज ही प्लेइंग फॉर एनी टीम? he is playing for RCB currently. He comes in as impact player. Oh God! So I think that is another link to it. Like whenever he's with some team, that team wins the trophy, and maybe it is another link for RCB fans. Congratulations! Maybe that is going to be something very much exciting this time. I would like to see. I would like to really see agar RCB इस साल trophy जीती. But let's come back to the Gujarat Titans and Lucknow Super Giants match today. Let's take a look at social tracker as well, like what people are discussing about this match particularly. Some tweets are there where people are giving their opinion on matches and definitely the pointers which we all should be discussing. Let's take a look. Pandya Brothers GT versus LSG.
today's scene, bring it on brothers, and we know this fight, ये जिस तरीके से फेमस हुआ था ये मीम, so आज भी डेफिनेटली एक तरफ होंगे हार्दिक पांड्या और एक तरफ होंगे कृणाल पांड्या to give this kind of a vibe. It's between the two best friends, it's between the two brothers, it's between the two teams, and we have changed the tweet. Okay. Let's take another look at another tweet. Let's have another round today. Gigi Gautam Gambhir coming to witness it live, and we know this aggression और जिस तरीके से गौतम गंभीर फेमस है, कुछ वैसा ही माहौल ईद सेलिब्रेशंस विद द टाइटंस, और यहाँ पर टाइटंस को और एलएसजी टीम को देखा गया ईद सेलिब्रेट करते हुए विद द प्लेयर्स इटसेल्फ। और ये एक बहुत ही सुंदर ग्राफिक लखनऊ के रूमी गेट के बाहर गुजरात टाइटंस इस वक्त मौजूद, और जिस तरीके से वो लोग लखनऊ में गेम खेलने आ रहे हैं, दावत आईपीएल बनेगा और भी स्वाद जब लगेगा तड़का भाई विलरी का। Titans, are you ready for cracker in the city of Nawabs? So yeah, definitely we all are pretty excited about this match. इस मैच के सभी पॉइंटर्स लगभग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट डेफिनेटली देयर इज वन थिंग वी शुड बी डिस्कसिंग। चराइयो, एक ट्वीट भी था जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि कृणाल पांड्या वर्सेस हार्दिक पांड्या, द सिबलिंग राइवलरी वी नो, हमने आईपीएल में भी इट्सेल्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कई बार क्रिकेटर्स को जो कि सिबलिंग्स हैं या फिर कजिन्स हैं और उनको हमने मैचेस में खेलते हुए देखा है। सो ये बहुत डिफरेंट फीलिंग होती होगी। लाइक इस बार भी जब मार्को जेंसन और वान जेंसन, जिनको एसआरएचएमआई दोनों टीम्स को खेलना था, बट वान को मौका नहीं मिला था खेलने का, सो मार्को वाज देयर, बट फैमिलीज बहुत खुश थी। उन्होंने अपना इंटरव्यू में भी बोला था कि इट्स रियली स्पेशल टू सी दीज टू प्लेयर्स, our two members playing like against each other, and it is really special. पूरी teams divide हो जाती हैं, families divide हो जाती हैं, but एक काफी proud moment होता है। And today as well we see like already Pandya family बहुत moments पे कृणाल और हार्दिक को देख चुकी है, and today they are going to play each other like एक दूसरे के against खेलेंगे। So which Pandya has more weight in their skill set than the other one? Whom will you pick? Like since Hardik is the captain of the side, so I would definitely pick Hardik as the better player. But Krunal Pandya has been really impressive in this IPL. At least for me, he's bowling really well. He was sidelined from the Indian side due to his poor performances, but now he has come back and he's really proving his point. He was player of the match in one game. He took a couple of wickets and all that. But the rivalry that you say, this will always be there, and it is always a good sight for the fans to see कि शायद वो अपने दो सबसे फेवरेट खिलाड़ियों को देयर टू सी द फेवरेट ब्रदर ड्यू compete against each other. हम शायद ये भी देखेंगे कि एक बॉलिंग कर रहा है और एक बैटिंग कर रहा है एट द सेम टाइम, और इस टाइम पे अगर कुछ एक सिग्निफिकेंट मोमेंट हो जाता है कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो जाए कि कोई किसी का विकेट ले ले या कोई किसी को बैक टू बैक बाउंड्रीज मार दे, तो ये हमेशा एक मोमेंट बन जाता है और इसको मतलब फैंस भी काफी इंजॉय करते हैं। तो यस, द पांड्या rivalry will really be something that the fans will be looking up to. Right, and then we have got another question from Mr. Ajmeri Siddharth. He's asking how to watch IPL in Canada. Kaustav, do you want to answer this? I think it will be broadcasted on Disney Plus Hotstar in Canada and in UK as well, probably. But for more information, I think you guys can check on CricTracker's website. We have all Yeah. the details covered. Be it in whichever country you are in, you can watch IPL, and you will get to know which broadcaster are particularly broadcasting in that region if you check CricTracker's website. Right. So is it this like in India we are watching it for free due to Jio Cinema, courtesy to Mr. Ambani? But is it like all over the world people are watching IPL for free, or they have to pay some premiums? They'll have to pay because Disney and Hotstar will ask for money, of course. And CricBuzz is also broadcasting in some areas, and of course they will charge for CricBuzz Plus app. Okay. So that's quite an information today. Thank you so much for joining me, Kaustav and Chirayu. But definitely for you viewers, जैसे कि Kaustav ने बोला, you can just simply go to CricTracker's live blogging, जहाँ पर आपको सारी information मिलेगी about the match, minute to minute updates जो आप miss out नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा all you need to know about के articles भी आपको वहाँ पर listed मिलेंगे. So just go and just simply check all the information you wanted. Thank you so much, all the people who are watching us. Keep watching CricTracker and keep watching in the Edge Show.